Assalamu-Alikum everyone. Today I am here to solve the sample paper of law admission test, and this video will be very helpful to you to gain good marks in exams of LAT 2023. So don't miss this video and must watch this video from starting to end. So let's start. Fill in the blanks with suitable words. खाली जगह पूर्ण करें. The first MCQ is here. The windows are bare because I dash like curtains. खिड़कियाँ खुली हैं क्योंकि मैं पर्दे पसंद नहीं करती हूँ. So the correct one will be here. Don't. The windows are bare because I don't like curtains. So here D option is correct. The next is how dash money do you have? आपके पास कितने पैसे हैं? So for money the correct word will be much. How much money do you have? So here B option is correct. The next is did you dash the word essay? In word essay is derived from Latin word Exagium. क्या आप जानते थे कि लफ्ज़ ऐसे में लफ्ज़ ऐसे लतीनी लफ्ज़ Exagium से निकला है? The word correct word will be here no. Did you know the word essay? In word essay is derived from Latin word Exagium. So here C option is correct. The next is the idea dash longer match the reality of the modern world. ये ख्याल जदीद दुनिया की हकीकत से मैच नहीं करता है. For longer word the dash word must be no. This idea no longer matches the reality of the modern world. So here C option is correct. The next is where did you dash last summer? तुमने पिछला समर कहाँ गुजारा? Where did you visit last summer? So here C option is correct. The next is education must focus dash helping students gain information management and innovation skills. तालीम को मालूमात हासिल करने और नई स्किल्स हासिल करने में स्टूडेंट्स की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए. So the correct word for helping students must be on. Education must focus on helping students gain information management and innovation skills. So here A option is correct. The next is in the second section you have to choose a similar word here for HEC. The meaning of HEC is परेशानी. HEC का मतलब क्या है? HEC का मतलब है परेशानी. So inconvenience is the correct one. The next is explicit का मतलब है वाज़िया करना. So obvious is the correct one. The next is candid. Candid का मतलब है सच्चाई. So truthful is the correct one. The next is epidemic का मतलब होता है बीमारी मर्ज. So contagious is the correct one. The next is astonishing. Astonishing का मतलब होता है हैरान कुन. So marvelous is the correct one. The next is eager का मतलब होता है पुरजोश होना. So ambitious is the correct one. The next is in the third and last section you have to select the opposite words. Antonyms मुखालिफ लफ्ज़ तलाश करें. grab का मतलब होता है पकड़ना. seize का मतलब भी पकड़ना होता है capture catch. But release का मतलब होता है छोड़ देना. So the opposite word for grab is release. So C option is correct. The next is the opposite word of precedent. Precedent का मतलब होता है मिसाल. Example, criterion, norm का मतलब मिसाल होता है, लेकिन ultimate का मतलब होता है आखिरी. So ultimate is the opposite word for precedent, मिसाल. So here D option is correct. The next is the opposite word for entitle. Entitle का मतलब होता है इख्तियार होना, इजाज़त देना. Permit का मतलब designate, empower are the similar words, but forbidden का मतलब होता है मना करना. So entitle for forbidden are the opposite words. So here A option is correct. The next is the opposite word for retrieve.
रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना, प्रिविलेज, रिट्रेन, गेन का मतलब हासिल, बट लूज का मतलब होता है खोना, बट लूज इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर रिट्रीव, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज प्रिसीजन का मतलब होता है दुरुस्तगी, करेक्ट। एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस आर, बट वैग्यूनेस इज द मतलब होता है गलत होना, सो वैग्यूनेस एंड प्रिसीजन आर द ऑपोजिट वर्ड, सो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा आबादी है, चाइना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स विद विच टू कंट्रीज, कराक्रम हाईवे दो मुल्कों से को मिलता है, पाकिस्तान एंड चाइना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज इंग्लिश चैनल बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंग्लैंड फ्रांस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज BREXIT stands for exit of England from European countries, B option is correct. The next is Commonwealth, association of those countries which are former territories of British Empire, A option is correct. The next is which country has no codified constitution, England, D option is correct. The next is which country is hosting next football world cup, कौन सा मुल्क नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, कतार, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज टीन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी सदर की मियाद 4 ईयर्स है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज विच वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज आईफा टावर इज इन द सिटी ऑफ, आईफा टावर पेरिस के शहर में है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन ईयर 1979, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज विच कंट्री इज फेमस फॉर टी प्रोड्यूसिंग, कौन सा मुल्क चाय पैदा करने में फेमस है, चाइना एंड केनिया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज रिवर काबल, दरिया काबल फ्लो करता है फ्रॉम अफगानिस्तान टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज विच टू कंट्रीज हैव शेयरिंग नो बॉर्डर, ईरान एंड चाइना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज जंगीज खान was the founder of Mongol Empire, B option is correct. The next is Taxila Museum has collection of Gandhara arts, A option is correct. The next is Ottoman Empire historically known to Turkey, C option is correct. The next is United Nations headquarter is in which city, New York, C option is correct. The next is which country has not the status of nuclear power, Germany. The next, the project CPEC between which two countries, Pakistan and China, C option is correct. The next is Muslim perform Hajj on which day of Zilhaj, मुसलमान 10 जिलहज को हज परफॉर्म करते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है इन मुहर्रम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज मिसाक मदीना के जा का मुआहदा मुसलमान और यहूदियों के दरमियान हुआ, ज्यूज़, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज मुसलमान किस साल के किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, उम्रा मुसलमान किसी भी टाइम साल के किसी भी हिस्से में परफॉर्म कर सकते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज हजर अस्वद वाज प्लेस्ड एट काबा। द नेक्स्ट इज विच बैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्लाम, कौन सी जंग इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, यरमौक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज खतीबुल-अनबिया वाज द टाइटल ऑफ प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम, डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच एयर इज कॉल्ड Am-UlHuzn, एयर ऑफ ग्रीफ, यानी गम का साल कौन सा साल कहलाता है, व्हेन हजरत खतीजा डाइड, व्हेन हजरत अबू तालिब डाइड, here both A and B are correct, so here D option is correct. The next is
Which king refused to hand over Muslims to Quraysh when they migrated to Abyssinia? किस बादशाह ने मुसलमानों को हिजरत करते वक्त कुरैश के हवाले करने से इनकार कर दिया? निजाशी. A option is correct. The next is, which was or were the terms of Treaty of Hudiabiya? हुदैबिया के मायदे की कौन कौन सी शराइत थी? मुस्लिम्स कैन परफॉर्म पिलग्रिम, मुसलमान हज कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन थी. मुस्लिम्स कैन ओनली स्टे फॉर 3 days एट मक्का वाइल परफॉर्मिंग हज, मुसलमान हज के दौरान मक्का में 3 दिन का क़याम कर सकते हैं. तीसरी शर्त थी देयर वुड बी नो फाइटिंग फॉर 10 years, 10 सालों के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. हियर all of the above questions are correct. The national game of Pakistan is hockey. B option is correct. The next is, general election held in Pakistan after every 5 years. B option is correct. The next is, capital of Pakistan was shifted from Karachi to Islamabad. A option is correct. The next is, Indus River does not pass through the province Balochistan. B option is correct. The next is, which city is famous for saints? Multan. A option is correct. The next is, the tomb of Pakistan poet Allama Muhammad Iqbal is in Lahore. C option is correct. The next is, Pakistan did not win the World Cup in football. D option is correct. The next is, Pakistan estimated population in 2020 is 220 million. C option is correct. The next is, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah died at Karachi. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah died on 11 September 1948 in Karachi. दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए. इताअत, हुक्म बजा लाना. A option is correct. The next is, ताजुब, हैरत. D option is correct. The next is, अंदेशा, अंदाज़ा. The next is, पसमानदा, गुर्बत. B option is correct. The next is, कनात, सब्र करना. D option is correct. The next is, अस्फादा, फ़ायदा. The next, मकबूलियत, मशहूर. The next, मुफीद, फ़ायदामंद. The next, सखी, दरियादिल. The next, Khalil, Mukhtasar. So the last part of mathematics is here. 3/4 minus 1/4 plus 2/4 plus 4/8 is equal to 1.5. D option is correct, because let's solve the question. Taking the LCM of 4, 3 minus 1 divided by 4 plus 2/4 is equal to 1/2 plus 4/8 is equal to 1/2. By solving the question, we'll get 1.5. So here in this MCQs, D option is correct. The next MCQs is here. A person bought a house for rupees 50,000. After 2 years, he sold the house at the profit of 5%. How much profit he made? 250,000. So let's solve the question here. 5% multiplied by 50,000, 100,000. 5% can also be written as 5/100 multiplied by 100,000. By solving that, we'll get 250,000. So here in this MCQ, C option is correct. The next is, there are 60 students in the class. If 30% are boys, then how many girls are there in the class? 42. Let's solve the question. As given that 30% are boys, the number of boys is equal to 30% of total student. 30/100 multiplied by 60 will get 18. Hence, number of boys in the class is 18. Now we have to find the number of girls in the class. So we will subtract the number of boys from the total student. Number of girls is equal to 60 minus 18 will get 42. So the number of girls in the class are 42. So here in this MCQs, A option is correct. The next is, if x by 3 plus 5x by 3 plus 12x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 2/7, because
x by 3 plus 5x by 3 plus 12 minus 4 is equal to, by solving the question will get 42, x is equal to 12, x is equal to 2 by 7. So here in this MCQs, D option is correct. So this is the last MCQs. Simplify the 2x plus 3 plus 6x minus 3 minus 3x minus 5 will get 5x plus 5, because by separating the variables 2x plus 6x minus 3x plus the constants 3 minus 3 plus 5 will get 5x plus 5. So here in this MCQs, B option is correct. Thanks for watching this video. Also share this lecture with your classmates and friends so that they also have a benefit of it, and don't forget to like and subscribe this video, and you can also visit the playlist of this channel to learn more and more. Goodbye.